Hello guys, I'm Praveen and welcome back to new video tutorial Data Structure and Algorithm। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटायर सिलेबस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर कंसेप्ट एंड डेफिनेशन, व्हाई वी नीड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर कंसेप्ट एंड टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एंड लास्ट सम बेसिक ऑपरेशन इन डेटा स्ट्रक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So guys, this is the syllabus of data structure, that is introduction of data structure, array, stack, queue, linked list, tree, graph and hash table. Now we are discuss data structure definition. Data structure is a particular way of storing and organizing set of data in a memory and perform set of operation on it. In a simple way or in a simple word, data structure is a concept of set of algorithm like array, stack, tree यूज टू स्ट्रक्चर द इंफॉर्मेशन। कहने का सिंपल सा मीनिंग ये है कि डेटा स्ट्रक्चर एक स्पेसिफिक वे प्रोवाइड करता है जिसके जरिए ये इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर मेमोरी में एक स्ट्रक्चर वे में स्टोर करता है और ज़रूरत पड़ने पर उस इंफॉर्मेशन को क्विकली एक्सेस भी कर सकता है बाय द लॉजिकल एंड मैथमेटिकल प्रोसेस विच आर इम्प्लीमेंट इन योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने प्रोग्राम में एरे डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं तो ये डेटा को एक सीक्वेंशियल मैनर में या फिर कह लो एक लीनियर मैनर में स्टोर करेगा लॉजिकली। और अगर हम अपने प्रोग्राम में ट्री डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं तो हमारे डेटा को हायरार्किकल फॉर्म में स्टोर करेगा। सो हम लोग इन डेटा स्ट्रक्चर का यूज अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम करते हैं। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम वी आर अप्लाई द डेटा स्ट्रक्चर। सम प्रॉब्लम आर सॉल्व बाय द एरे डेटा स्ट्रक्चर, सम प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय द ट्री डेटा स्ट्रक्चर, some problem can be solved by the linked list. So according to problem we are implement the data structure. So by the data structure concept we can perform many operation on it like searching, insertion, deletion, modification and many operations. There is some key point like data structure is not a technology, it is not a software, it is not a physical entity, it is not a data type. Data structure not any programming language like C, C++, Java. So data structure is a way in which there are set of rule, regulation and set of protocol in which define how to data will stored. Now we are discuss why we need of data structure. First of all, I will try to understanding it to you by a real world problem. If we consider big companies like Google, Facebook, Amazon, जहाँ पर GBs and GBs of data every day, every single minute, every single hour collect होती है, so they need to manage that data also. और अगर स्टोरेज फॉर्मेट के हिसाब से समझा जाए तो स्टोरेज फॉर्मेट शुड बी इफिशिएंट सो दैट दे कैन एक्सेस इजली और परफॉर्म सम मॉडिफिकेशन इजली। बट यहाँ पर मिलियंस रिकॉर्ड अवेलेबल है, बट इफ़ दे आर नॉट एबल टू फाइंड आउट दैट सिंगल रिकॉर्ड क्विकली, दैट इज़ नॉट बेटर फॉर इट। सो यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना बेस्ट होगा। तो डेटा स्ट्रक्चर आर यूज इन ऑलमोस्ट एवरी प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर सिस्टम। डेटा स्ट्रक्चर अलाउ एफिशिएंट डेटा सर्च एंड रिट्रीवल। स्पेसिफिक डेटा स्ट्रक्चर आर डिसाइडेड टू वर्क ऑन स्पेसिफिक प्रॉब्लम। जैसे कि मैंने आपको पहले बता ही चुका है कि स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए हम स्पेसिफिक डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम वी यूज द डेटा स्ट्रक्चर. It allow to manage large amount of data such as large database and indexing service such as hash table. Now we are discuss the type of data structure. It categorized basically two part: primitive data structure and non-primitive data structure. Primitive data structure basically आप लोगों ने C लैंग्वेज में पढ़ा होगा। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर की खास बात यह है कि इट कंटेन ओनली सिंगल वैल्यू लाइक इंटीजर वेरिएबल कंटेन सिंगल वैल्यू ऑफ इंटीजर वैल्यू. Now second is non-primitive data type. It is further divided into two parts: linear data structure and non-linear data structure. Linear data structure contain array, stack, queue, linked list, and non-linear data structure contain tree, graph, and hash table. Now this is the some basic operation in data structure, that is searching, sorting, insertion, deletion, modification एंड ट्रैवर्सिंग. यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो हम लोग डेटा स्ट्रक्चर कोडिंग में इम्प्लीमेंट करेंगे वो सी लैंग्वेज के थ्रू करने वाले हैं फर्दर वीडियो में. ओके गाइस, टुडे टॉपिक इज कंप्लीट. वी विल मीट यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए हैव अ गुड डे. थैंक यू. और हाँ,
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना यार। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे।